Assalamu alaikum students. Today we have a second lecture of Social Studies, Book 5. Now we will open the lesson number 1, that is World Geography. In a previous lecture, we have studied about maps. There are three types of maps: physical maps, political maps, and the relief maps. Today we will study the second topic, that is latitudes and longitudes and the latitude. So we will start. Before starting the lecture, first of all mention today date and also the day. The longitude and the latitude. To make it easy for us find a place on a map, we use an artificial grid made up of vertical and the horizontal lines. कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्लेस को मैप पर ढूंढने के लिए हम एक आर्टिफिशियल ग्रिड का मतलब होता है लाइंस होती हैं. जैसे हमारे पास these are the lines. It is also in horizontal position and also in a vertical position. So मैप पे हम लोग कोई भी प्लेस ढूंढने के लिए हम एक आर्टिफिशियल ग्रिड्स लगाते हैं जो हमारे पास किसकी बनी होती हैं, वर्टिकल लाइन की एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस की बनी होती हैं. ठीक है. अब हमें पता ये होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है. ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मीन बाय लॉन्गिट्यूड. ठीक है. The vertical lines are drawn from north to south, passing through the north and south poles. These lines running north to south are called meridians of longitude. So longitude हमारे पास क्या होता है, वर्टिकल लाइंस जो हमारे पास नॉर्थ से साउथ. अब हमें पता है नॉर्थ क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ है, नीचे हमारे पास क्या है, साउथ है, यहाँ इस साइड में वेस्ट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईस्ट है. जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हमारे पास लॉन्गिट्यूड होता है वर्टिकल लाइंस. यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स इज नोन एज लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. तो हमारे पास क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड्स क्या होगी, वर्टिकल लाइन दैट आर पासिस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल्स इज नोन एज लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, हो गया. और हमारे पास फिर आता है नेक्स्ट वन, दैट इज लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड क्या होता है हमारे पास, द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट parallel to the equator. These lines running east to west are called parallel of latitudes. Most good maps show these lines. अब हमारे पास लैटिट्यूड क्या होता है, पहले तो बात होगी हमारे पास वर्टिकल पोजीशंस की. ठीक हो गया. दीज आर वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस. तो अब हमारे पास क्या होता है, ये होती है हमारे पास वर्टिकल लाइंस और इस डायरेक्शन में जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस. So अब हमारे पास वो लाइंस, द लाइंस विच इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, विच इज इन विच डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. The horizontal lines, the horizontal line passing from east to west is known as parallel of latitudes. These all are latitudes. These horizontal lines are known as latitudes. These are called latitudes. यहाँ पे आपको वैसे सही नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये हमारे पास क्या है, सारी वर्टिकल लाइन है. दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. और पैरेलल हमारे पास लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर एंड नॉट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर वन लाइन, दिस इज वन लाइन, they never meet each other. These are called parallel lines. These are parallel to each other both. So in this diagram, these are all parallels to each other. These are parallel. These are in vertical horizontal position. इस तरह भी हम देख लेंगे तो these are in a vertical position. They are also parallel to each other. Next one is, पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए.
अब हमारे पास यहाँ पे हमने बताना है, हमारे पास हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, वन इज़ लॉन्गिट्यूड एंड अदर इज़ अ लैटिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स हमारे पास क्या है, these are longitudes. These vertical lines are known as longitudes. These vertical lines are known as longitudes, which are passing from north to south, which are passing from north to south. These are called longitudes. These are called longitude because this is north pole, this is south pole. So the vertical line that it passes from north pole to south pole is known as longitude. So these are all lines are called longitudes. And next one, what is meant by latitudes? These horizontal lines, which is passes from east to west, horizontal lines, these are known as latitudes. These are all horizontal lines and these are parallel to each other and these are latitudes. We call these latitudes. Okay, now coming to the book, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करते जाएं साथ साथ जो मैंने अंडरलाइन किए हैं. द नेक्स्ट वन इज दैट इज इक्वेटर. नाउ व्हाट इज इक्वेटर? The equator is the line of latitude which goes all the way around the middle of the earth. Equator is the line of latitude. Why we call this line of latitude? We call this line of latitude because this picture को देखें आप, this is a line of latitude. हमें पता है latitude is in horizontal direction, so these are horizontal line, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, latitude का है. ठीक है, तो इक्वेटर हमारे पास क्या होता है, इक्वेटर वो वाली लाइन होती है which passes through the center of the earth and divided the earth into the northern hemisphere and the southern hemisphere. Upward is north and downward is south. So earth is the line of latitude that divides the earth into two equal hemisphere, northern hemisphere and the southern hemisphere. So at 0 degree centigrade, we look at this picture, at 0 degree centigrade, the line of latitude passing through the center of the earth and divided earth into northern hemisphere and the southern hemisphere. This line is known as equator. So this is a line of latitude. This is not a line of longitude. Longitude is in this direction, but this is a line of it is in horizontal position. That's why we also call this line of latitude. So the equator is a line of latitude which is passes through the center of the earth and divided the earth into the northern hemisphere and the southern hemispheres. So this is at 0 degree centigrade. This is the line of latitude or equator, जिसको हम इक्वेटर का नाम देते हैं. ओके, ये हो गया हमारे पास इक्वेटर क्या होता है. ठीक है, अब इक्वेटर क्या कहता है, इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर. लुक एट दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. So this line is equator at 0 degree centigrade at the center of the earth. This line divide the earth into the northern hemisphere and southern hemisphere. So it divides the earth into northern and the southern hemispheres. Mean to say कि two equal parts में divide कर दिया इक्वेटर ने at 0 degree centigrade equator, and it divide the earth into two equal parts in northern hemisphere and the southern hemispheres. So three things are there. First one is that is latitude, second one is the longitude, and third one that is equator. Now come to the page number 4. There are 90 parallel of latitudes in each hemisphere. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास, अब ये जो हमारे पास लैटिट्यूड है, डायग्राम को देख लें. दीज आर ऑल लैटिट्यूड्स, इक्वेटर आगे, फिर आगे लैटिट्यूड. मीन टू से कि हमारे पास अबव द इक्वेटर एंड बिलो द इक्वेटर देयर आर 90 पैरेलल लैटिट्यूड्स, एंड बिलो द इक्वेटर देयर इज आल्सो पैरेलल 90 पैरेलल लैटिट्यूड्स. ठीक है, the equator is at 0 degree. We have seen that the equator is at 0 degree.
the equator line is at 0 degree. ठीक है, at 0 degree, and the degrees increases northwards or southwards from the equator as we move above the equator or below the equator. Above the equator देख लेंगे, equator is at 0 degree centigrade. When we move from 0 degree centigrade above toward the southward, this is a south, this is a north. When we move toward the northward or below equator toward southward, both degrees are increases. यहाँ पहले है 0 डिग्री, मूव फॉरवर्ड 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 180. Need to say when we move from equator toward the northward, the degrees increases, and in below we move from equator toward the southward, the degrees are also increases 20, 40, 60, 80 and 90. As we move above or below, the degrees are increases. The north pole is at 90 degree north and the south pole is at 90 degree south. Going back toward page number 3, look at this diagram. At above north pole and below is south pole. At above there is a 90 degree north pole and at below there is a 90 degree south pole. ठीक है, next one is the meridians of longitude are also marked in degrees. As we know that the latitudes are also marked in degrees, same as the longitude are also marked in degrees. These are longitudes, they are also marked in degrees. You know that there are 360 degrees in a complete circle. We know that the circle is 360 degree, whole circle is 360 degree, so there are also 360 degree और meridians of a longitude. हमारे पास हम क्या होगा, सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड भी, meridians of longitude भी कितने होंगे हमारे पास, 360 डिग्री के होंगे. All the meridian pass through the poles are of equal length. जितने भी meridians हम हमारे पास poles के ज़रिए जो हैं वो, these are meridians, these are longitude, these are all meridians और these are latitudes. इन सब की लेंथ क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी. all the poles are equal length. one of these line has to be 0 degree, but इनमें से एक लाइन जो है वो हमारे पास क्या होगी, that is 0 degree. और उस लाइन को हम क्या कहते हैं, this is called the prime meridian and pass through the Greenwich, England. अब हमारे पास उसमें से एक लाइन क्या है, वो हमारे पास 0 डिग्री मार्क की जाती है और उसको हम किसका नेम देते हैं, प्राइम मेरिडियन. वो लाइन कहाँ से पास हो रही होती है, इंग्लैंड में एक है हमारे पास ग्रीनविच, वहाँ से ये लाइन पास हो रही होती है जिसको हम किसका नेम देते हैं, प्राइम मेरिडियन. लुक एट दिस पिक्चर. ऑल दीज आर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, line of longitude, they are of equal length, but at the center of these longitude there is a 0 degree centigrade, there is a 0 degree line. This 0 degree line is known as prime meridian. What is called prime meridian? This 0 degree line is known as prime meridian. This 0 degree line is known as prime meridian. And at the latitude, this 0 degree line is equator, whereas in case of longitude, this 0 degree line is known as prime meridian. Okay, now this is called the prime meridian and it passes through the Greenwich, England. Lines drawn to the west of the prime meridians are marked with the west and those to the east are marked with the east. अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगर हम we have seen that this is west and this is east. We move from meridian, this is a prime meridian, we move from meridian toward the west, so it is known as, it is marked as W. So this is marked as a W. We move from